Anaivarukkum Vadakkam Kemanaju. Myself Neil Pare, and I'm from Mumbai head office. So, topic for the today's webinar: the mean revision tactics. So, I'll promise I'll not bore you with the theories of mean revision. I'll explain you the practicality of the mean revision strategies and the functionality with the help of Spider software technical queries. So, I'll hide myself now, and we'll start with the flow of the webinar. So the flow of the webinar. What is mean revision would be the first topic. After that, we'll cover the mean revision tactic 1, which is the strategy 1. Secondly, we'll discuss the scanner part, the technical query part, and the case studies of this particular strategy. Same. Then we'll discuss the follow-up by tactic 2 and the scanner and the case study. So we'll carry forward with this, what is mean revision. And don't worry, I'll explain the concept of mean revision in Hindi as well as in English language. So both the users are benefited the most and get the most of the insight from the webinar. So stay tuned to the end of the webinar. So what is mean revision? In technical analysis, mean revision is a strategy used to identify stocks that have moved away from their historical average price and are likely to revert back to the mean price in the near future. So इसका मतलब क्या हुआ? जो mean revision है वो हमें क्या बता रहा है, जो मेरे एवरेज प्राइस से मेरा जो पर्टिकुलर मीन है वो कितना फार अवे जा रहा है. अगर मुझे पता चला कि अगर मेरा जो प्राइस है सपोज ट्रेड कर रहा है 108 एंड मेरा एवरेज प्राइस है 95 80, तो मतलब मेरा जो प्राइस है एवरेज से बहुत ही डिफरेंट डिविएट हो गया है, तो चांसेस है कि वो वापस से प्राइस को रिवर्ट करना आएगा. तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मीन रिवर्जन. So traders who use mean reversion in technical analysis look for stocks that are trading at either extreme high or low levels relative to their average price and expect the price to move back towards the mean. So जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर मेरा पर्टिकुलर प्राइस एवरेज हिस्टोरिकल एवरेज से ज्यादा डेविएट हो चुका है तो चांसेस रहता है कि एक्सट्रीम हाई पॉइंट से रिवर्स मार सकता है एंड एक्सट्रीम लो पॉइंट से अपवर्ड रिवर्स मार सकता है. तो वो जो रिवर्सल पॉइंट है आज हम वो कैच करने वाले हैं. तो सिंपल टर्म्स में मीन रिविजन हम आगे भी दिखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ. तो जो मीन रिविजन स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं उनका बेसिक कंसेप्ट यही रहता है, गो लॉन्ग इन फियर एंड शॉर्ट इन ग्रीड इज द मेन आइडियोलॉजी ऑफ द मीन रिविजन ट्रेडर्स. सो मतलब अगर मार्केट में ज्यादा कुछ मंदी का माहौल है तो वहां पे वो ट्राई करेंगे रिवर्सल कैच करने का बेस्ड ऑन द मीन रिवर्जन टैक्टिक्स. तो मीन रिवर्जन एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इवन इफ द साइडवेज मार्केट में भी ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, तो कंबाइंड विद द क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट. So mean revision, basically we can see over here the price is the candlestick pattern and the red and the green line over here, which is a particular average line I have plotted. So whenever your price deviate more from the mean, the very high chances that price will get revert back to the mean average. Mean is basically an average value, okay, and the price deviation is this one, and it has reverted till here. So this is basically in a nutshell, this is a concept of mean reversion. When the price deviates from the mean at the extreme high point, there are very high probability it will revert back to the mean. So let's discuss with a real life example. So mean reversion is like a behavior of an ocean tides. So जैसे हमने देखा रहेगा ओशंस में, जैसे कि हमें बोलते हैं कि हाई टाइड हो रहा है, लो टाइड हो रहा है. जब ये हाई टाइड एंड लो टाइड होता है तो जो ओशन का पानी है वो नियर टू द लैंड आइलैंड आ जाता है एंड वापस से रिवर्ट बैक हो जाता है. तो वापस से अपने एक रिवर्स मीन एवरेज पे वहां पे आ जाता है वो. So the tide rise and fall around their average level due to gravitational pull of the moon and the sun. The water level may deviate significantly from the average level due to the factors such as winds, storms, but over time it tend to return to its average level. तो मतलब जैसे ओशंस में भी मून एंड द सन की पोजीशन के बेस पे जो वेव्स रहते हैं वो डेविएट होते हैं आगे पीछे, वैसे ही हमारे मार्केट में अगर हम इसको कॉन्सेप्ट को लेके आए तो जो स्टॉक अगर अपने एवरेज प्राइस से ज्यादा डेविएट हो चुका है तो वहां से वापस से रिवर्स मारेगा, अपने मीन तक सपोर्ट लेगा. तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो सिमिलरली इन स्टॉक ट्रेडिंग, प्राइस ऑफ एन एसेट टेंड टू फ्लक्चुएट अराउंड देयर एवरेज वैल्यू due to various factors such as market sentiment, company performance, economic conditions, and news and other flow, etc. However, this fluctuation may temporary and may not reflect the true value of the stock. तो ये सारे जो चेंजेस रहते हैं, जैसे कि कुछ अगर कंपनी का न्यूज डिक्लेयर हुआ है या फिर कुछ इवेंट हुआ है, तो वो जो टेम्पररी फ्लक्चुएशंस रहता है, ओके, वो उसका फेयर वैल्यू नहीं रहता है स्टॉक का. तो अगर पर्टिकुलर स्टॉक अपने फेयर वैल्यू से बहुत ही डेविएट हो चुका है
तो वो अपने फेयर वैल्यू तक वापस आने का प्रोबेबिलिटी उसका हाई रहेगा। उसका भी हम एग्जांपल्स देखेंगे आगे। तो मीन रिवर्जन प्राइस अपने एवरेज के वहां पे डेविएट करते रहता है। ओके, इस बेसिकली साइक्लिकल मूवमेंट। सो अभी हम आ जाते हैं tactic 1, mean reversion tactic 1. Okay, so we'll start with the tactic 1. Tactic 1 is basically strategy 1 of the mean reversion. This strategy is completely based on the price action. I have not added any fancy indicators. You can combine this strategy with your favorite indicator like RSI, Bollinger Band, Cattler ATR band, anything. But I have made my own indicator over here, which is a mean reversion study. This particular indicator has been made with two components available in the spider, which is formula A2 and the average study. So the concept about this particular mean reversion tactic 1 is that whenever the first candle price deviates from the mean is basically I have added a 5 period and 8 period moving average in the chart. Okay, so whenever the first candle, as in the box highlighted, you can see the first red candle has been deviated from the mean, which is an average, and the second follow-up candle, it should be the strong bullish candle and should surpass it should taken out the high of the first candle. And along with that, our mean reversion indicator, which I have made from the spider software technical tools, it should be in the positive scenario. Okay, so whenever these three things match, the profitability of the trader starts from here. The second thing I can show you with the example of technical query. In this, I have made the whole concept in the technical query scanner. Okay, so this is the scanner. In this scanner, I have added tactic 1 and tactic 2, both the conditions. The whole condition is purely based on the price action theories, and I have almost used 50 conditions of this technical query. Technical query is very useful feature of spider software. We can make easily the criteria's conditions of the stock profitability we want. So first thing will see the bullish reversion. Okay, the bullish reversion condition. So I'll untick from others. Okay, so this is the bullish reversion condition. I have taken Nifty 500 as a universe in this group. Okay, and the second thing, I am focusing on the stocks which are having a market price above 50 value. Okay, I'm not considering the below 50 because of the liquidity issue. Okay, so you can add your rate as per your requirement. You can also take stock price above 100. And let's run this query on the offset of 3, so we can or 2, so we can get an example. So we have got one stock, which is a Chambal fertilizer. So I have taken a query offset over here of 3, sorry, of 2. So that means the number of bar over here should be 3. Okay, so this is the third candle which we have got the result. So over here you can see the first candle, the price has deviated from the mean, a mean of 5 period and the 8 period average. Secondly, second candle over here has surpassed the high of the first candle, which is a bullish momentum candle, and also our mean reversion indicator is giving a positive signal. That means this is a best setup to trade over here. And for a swing trading, this particular strategy, tactic 1 and tactic 2, which I'll be sharing, is based on the swing trading perspective. So over here, the swing trading criteria has been activated. Okay, now for the stop loss point of view, you can take the stop loss of this particular first candle low, as well as you can take an ATR stop loss as per your requirement. And also you can take a low and plus 5 point down as a stop loss. Okay, now let's take some overview. Okay, so what will be the bullish setup for us? The first candle high should be above 5 EMA and 10 EMA, and close should be below average. It shows the close is deviated from the mean. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने देखा जो हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये वाला कैंडल, ये इसका जो हाई है अपने 5 पीरियड एंड 8 पीरियड एवरेज के ऊपर होना चाहिए, एंड जो लेकिन उसका जो क्लोज है वो उसके नीचे होना चाहिए. तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस है अपने एवरेज से ज्यादा डिविएट हो चुका है. एंड जो सेकंड कैंडल है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए, एंड जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वो टेकन आउट होना चाहिए. ओके, वही मैंने यहाँ पे पीपीटी में मेंशन किया स्टेप्स पूरे. Second candle should be strong bullish and first candle high should get taken out. Okay, along with that,
the third entry would be mean reversion study should be positive with above two conditions. So the lower panel में मैंने इंडिकेटर ऐड किया है, वो मैंने यहाँ पे मीन रिवर्जन इंडिकेटर ऐड किया है, वो यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज के बेस पे बना, जैसे हमने पीपीटी में भी देखा। तो ये इंडिकेटर हमें पॉजिटिव नोट देना चाहिए। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नोट दे रहा है, तो ये हमारा एंट्री क्राइटेरिया फिट हो गया है यहाँ पे। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, प्रायर कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो, या फिर जो लो वैल्यू है प्लस 5 पॉइंट्स। एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा अभी हमारा, क्योंकि बहुत जन रहते हैं कि मार्केट में एंट्री तो सब बता देते हैं क्रॉस ओवर के बेस पे, लेकिन वो उस एंट्री को एग्जिट कब करना है वो बहुत कम जन बताते हैं। तो ये जो मीन रिवर्जन सेटअप है वो आपको एंट्री एंड एग्जिट, टाइमली एग्जिट पता देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये टाइमली एग्जिट बताएगा। तो ट्रेड एग्जिट व्हेन मीन रिवर्जन स्टडी गिव नेगेटिव क्रॉसओवर। So over here, whenever you get a negative crossover in this particular mean reversion study indicator, that time will score off this particular trade, swing trade. Okay. So these are the bullish setup. The first candle should be above 5 EMA and 10 EMA, and the close should be below average. It shows the close is deviated from the mean. Second candle should be strong bullish, and first candle high should get taken out. Our entry would be mean reversion study should be positive with above two conditions. Okay, so whenever the mean reversion study goes positive with above two conditions, that time our tactic one entry would get filtered. And when we can exit this particular trade, when mean reversion study give negative crossover. So in the lower panel, mean reversion study should get negative crossover. That time will exit our trade, and it also gave a timely exit. Okay, ऐसा नहीं कि वो बहुत दूर तक चला गया उसके बाद वो exit दे रहा है। Okay, so beauty of mean reversion is that only that we can play this strategy in the sideways market as well as in trending market. As the most of you know that in the statistical term, that 70% of the market goes in sideways and only 30% gets in trending movement. So 70% of the time also you can use this strategy as well as in 30% of the time. The only criteria I want to share is over here that simply put your psychology in this. Okay, don't trade blindly based on the entry and exit. Put your psychology behind this. Like if you are seeing over here, like price has been fallen down from over high of this particular point 291, and it is taking rest over here. After taking a rest, it is giving a positive signal from the mean reversion study. That means it has started deviating from the mean and it can be surpassing the first candle high. So a positive momentum can be generated over here. Okay, so this is the best setup for swing trading perspective. Now let's take some example. So why to take nearest example? Let's take some far example also. So I'm taking example from 20. So we are looking 20 days back with the help of this query offset available in technical query tool. Okay, so I've offset this 20. Group is chosen as a Nifty 500 and run. So in 20th candle, we have not got any signal. So let's move to 19th. So query offset 19, run. Okay, so we have got only one stock in 19th candle, 19th back candle. So I'll click on this HDFC Bank. Now, which is the 19th candle? For that, press Control D and focus on 20th candle. Whenever we use this bar option, number of bar option in Control D, simply add 1+1 over here. Okay, so if I have added in query offset, technical query, as query offset as 19, that means we have to check number of bar over here 20th candle. Okay, because number of bar starts with 1, and in technical query we have an offset of 0. 0 means it's consider first day, the current day, as a 0, and in number of bar we can see it is showing us 1. That's why I have taken 20th bar over here. In query offset I am taking 19, and number of bar I'll check over here, which is a 20th candle, this one. So you can see number of bar over here in this is a 20th candle. So over here we have got the result. So this same criteria, first candle has been deviated from the mean, second candle has been surpassed, it has taken out this first candle high. Our mean revision indicator is also giving us a positive signal. So this is our perfect entry trade, swing trade, and it has been exited over here. I have exited my trade over here when this mean reversion study has been given a negative crossover. Okay, so it has also given me a timely exit. I have not booked my loss, I have booked my profits over here. Okay, so it also give a timely exit over here. Second, query offset as 18.
So in 18th we have got 3 stocks. First, over here, this is candle. So 18, that means we have to focus on 19th number of bar. So number of bar, 19th candle, this one. So first candle has been satisfied, second candle has been satisfied, plus the mean reversion study has been given as positive signal. This condition has been met perfect full. So हमने जो देखा यहाँ पे हमारा पहला कंडीशन भी मैच हो गया, जो कि एवरेज से प्राइस डेविएट हो चुका है. सेकंड कैंडल ने उसको सरपास कर लिया विद पॉजिटिव मोमेंटम एंड टेकिंग आउट द फर्स्ट कैंडल हाई. प्लस हमारा मीन रिवर्जन स्टडी भी पॉजिटिव सिग्नल कर रहा है यहाँ पे. तो हमने यहाँ पे अपना स्विंग ट्रेड एंट्री किया. ये जो मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज हम देख रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हैं. तो ये हमारा स्विंग ट्रेड यहाँ पे एंट्री हो गया. अब इस ट्रेड को एग्जिट कब करना है, तो ये मुझे वही मीन रिवर्जन स्टडी बता देगा. तो यहाँ पे देखो मेरा एक मीन रिवर्जन स्टडी ने जस्ट टच किया, क्रॉस ओवर नहीं दिया, लेकिन एज अ कॉशियस ट्रेडर मैं यहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, क्योंकि मीन रिवर्जन ने अटेम्प्ट किया उसको क्रॉस करने का. ओके, तो जब भी हमारा एंट्री होगा इस क्राइटेरिया पे होगा कि फर्स्ट कैंडल ने डेविएट किया, सेकंड कैंडल ने उसको सरपास कर दिया विद मोमेंटम. एंड द एग्जिट कब होगा, जब हमारा वो मीन रिवर्जन स्टडी हमें नेगेटिव सिग्नल देगा यहाँ पे, तब हमें एग्जिट हो जाना. यहाँ पे भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ, लेकिन उसने अटेम्प्ट किया क्रॉस करने का, तो मे बी इन नियर फ्यूचर वो क्रॉस कर लेगा, इसलिए मैंने अपना पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकता हूँ इजीली. सेकंड जो स्टॉक आया है हमें एफडीसी, ये हमें क्वेरी ऑफसेट ऑफ 18 पे ही आया है ये भी. तो मुझे नंबर ऑफ बार यहाँ पे 19 पे देखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल क्वेरी में हमने देखा कि ये 1 से यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेगा एंड नंबर ऑफ बार मुझे यहाँ पे 1 से काउंट करा रहा है. तो जो मैं क्वेरी ऑफसेट में यहाँ पे मेंशन किया मैंने 18, तो मुझे उसका +1 करना है यहाँ पे. तो मतलब यहाँ पे 19 कैंडल पे मुझे रिजल्ट आया. ओके, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो चुका है. तो यहाँ पे हमारा एंट्री बैठ गया. एफडीसी में अभी तक मेरा एग्जिट नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे क्रॉस ओवर अभी तक नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ नहीं है मीन रिवर्जन स्टडी में. Okay, so I hope you guys are understanding this setup. It's very simple and completely based on price action. If you want, you can add your further theories like RSI, Kettler band, or you can say Bollinger band. You can use as per your requirement. But based on my observation, these two studies will help you the most, because the concept of mean reversion is simple. Okay, it's simply playing around the mean and the price. Okay, so that's the basing of that logic only I have made this indicator and this strategy. Now let's take a query offset over here as 16 and run. Okay, so in this I have got over here around 1 2 3 4 5 6 candles. So I have got over here 6 stocks over here. So the first stock, which is a Wellspring industry. So query offset is 16. That means I have to check in the 17th candle. यहाँ पे मैंने क्वेरी ऑफसेट टेक्निकल क्वेरी में 16 रखा है, तो मुझे यहाँ पे चार्ट में 17th कैंडल पे चेक करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है. फर्स्ट कैंडल हैज बीन डेविएटेड फ्रॉम द मीन, सेकंड कैंडल हैज बीन सरपास्ड विद द स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एंड द मीन रिवर्जन स्टडी गिविंग अ पॉजिटिव सिग्नल. इसमें भी हमारा अभी तक एग्जिट नहीं हुआ. एग्जिट अभी तक नहीं हुआ, अभी तक मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ इजीली. This particular stock has been not exited yet because mean reversion study has not given a negative crossover. सेकंड देखेंगे तो HEG चेक करते हैं, रैंडमली कोई भी चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हमें 17 कैंडल पे आया था. इसमें भी अभी तक मेरा एग्जिट नहीं हुआ. ओके, ये भी मैं अभी तक ट्रेल कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि अभी तक मुझे मीन रिवर्जन ने कोई भी नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे नहीं दिया. यहाँ की मुझे वीकनेस का सिग्नल दिया यहाँ पे. ओके, फिर ग्रेफाइट चेक कर लेते हैं. ग्रेफाइट में भी यहाँ पे मैं अभी तक लॉन्ग ही हूँ, अभी तक मुझे एग्जिट नहीं मिला. लाइकवाइज क्वेरी ऑफसेट में यहाँ पे 12 करके चेक कर लेते हैं. तो 12 किया मतलब मुझे यहाँ पे 13 पे चेक करना पड़ेगा. तो मुझे एक ही स्टॉक आया, बजाज होल्डिंग. 12 किया मतलब मुझे 13 पे चेक करना पड़ेगा. 13 मतलब ये वाला बार आया हमारा. यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई हुआ था. इसमें भी अभी तक हमारा लॉन्ग पोजिशन बनाया हुआ है. ओके, so this is the beauty of this particular mean reversion tactic 1 strategy. It can help us to propel our profits till we get a negative crossover. So इसका पीपीटी का आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो, प्लस आफ्टर द वेबिनार मैं आपको बता दूंगा कि आपको पीपीटी एंड प्लस द स्क्रीन्स एंड द स्ट्रैटेजी, ये जो मैंने बनाया टेक्निकल क्वेरी, वो आपको कैसे मिलेगा. तो ये जो मीन रिवर्जन स्टडी है मैंने बेस्ड ऑन फॉर्मूला A2
एंड एवरेज स्टडी के बेस पे बनाया। तो ये आपको मीन रिवर्जन इंडिकेटर डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ओवर हियर। होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी हम आ जाते हैं टैक्टिक 2। टैक्टिक 2 इज बेसिकली अ मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी 2। ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें मैं डाइवर्जेंस का हेल्प ले रहा हूँ। तो सेम कॉन्सेप्ट, मीन रिवर्जन का इंडिकेटर प्लस प्राइस। ओके, इसमें हम डाइवर्जेंस का हेल्प ले रहे हैं। डाइवर्जेंस बेसिकली क्या रहता है, अगर मुझे प्राइस बता रहा है कि प्राइस को जाना है नीचे, लेकिन मुझे रिवर्जन इंडिकेटर बता रहा है कि वो ऊपर जा रहा है। ओके, तो उसका पोटेंशियल बता रहा है प्राइस का कि प्राइस को ऊपर ही जाना है प्राइस को। तो मुझे डाइवर्जेंस आ रहा है यहाँ पे दोनों के थॉट प्रोसेस में। प्राइस लोअर लो बना रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो मीन रिवर्जन इंडिकेटर है वो वहाँ पे हायर बॉटम्स बना रहा है। तो मतलब दोनों के बीच में एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। तो जब डाइवर्जेंस आता है तब हम इंडिकेटर का बात मानते हैं। ओके, जो मीन रिवर्जन स्टडी बोल रहा है हम उसकी बात मानेंगे वहाँ पे, कि मीन रिवर्जन ने वहाँ पे पता कि हायर बॉटम्स बन रहे हैं, मतलब कि स्टॉक में पॉजिटिविटी आने वाली है, एक बुलिश फेस आने वाला है। तो हम उसी के बेस पे यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। अब इसमें भी, इसका भी टेक्निकल क्वेरी आपको यहाँ पे बनाया है मैंने। तो अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस पे एनेबल कर देता हूँ, नेगेटिव डाइवर्जेंस पे एनेबल कर देता हूँ। एंड इस पे भी मैं यहाँ पे हम क्वेरी ऑफसेट यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 18 से ले लेते, तो कुछ दिन पहले के ही हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास पॉजिटिव डाइवर्जेंस में यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स आए, नेगेटिव डाइवर्जेंस में एक ही आया मेरे पास। अब यहाँ पे एक स्टॉक ले लेते हैं, RHIMM। यहाँ पे मुझे 18 मतलब मुझे 19 कैंडल पे चेक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है बिटवीन द प्राइस एंड द इंडिकेटर, वी कैन सी पॉजिटिव डाइवर्जेंस। व्हाई पॉजिटिव डाइवर्जेंस? बिकॉज this particular stock bottom is making a lower bottoms and the indicator mean reversion indicator is making a higher bottoms. ओके, तो ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना। अब इसका हम सेटअप कैसे रखेंगे, उसके लिए ये हमारा बुलिश सेटअप रहेगा टैक्टिक 2 का। So the price forming lower bottoms and mean reversion study forming higher bottoms. This is a bullish divergence. And when would be our entry point? Our entry point would be when after the divergence candle high is taken out along with the mean reversion study positive. तो जब एंट्री कब बैठेगा इसमें, एक तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सेकंड, जब ये डाइवर्जेंस कैंडल का हाई टेकन आउट होगा प्राइस के बेस पे, यहाँ पे ग्रीन बॉडी होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, तभी ये यहाँ पे हमें सिग्नल दे रहा है। उसके साथ साथ जो मीन रिवर्जन स्टडी है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो वो हमें एक सिग्नल देगा बुलिश फेस के लिए। ये टैक्टिक 2 स्ट्रैटेजी भी स्विंग बेस्ड स्ट्रैटेजी है। ओके, तो यहाँ पे भी हम इस कैंडल पे हमारा एंट्री बैठ गया। अब इसमें भी एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जिट क्राइटेरिया पे फोकस कीजिए। मार्केट में बहुत जन सिर्फ एंट्री एंट्री पे फोकस करता है, एग्जिट पे ध्यान नहीं देते। ओके, अगर आपने स्टॉक ले लिया 100 पे एंड वो स्टॉक गया 150 से, लेकिन आपने एग्जिट उसको 120 में किया है, तो वो कोई लॉजिक का सेंस नहीं बैठता। इसलिए जो स्ट्रैटेजी रहता है उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि एंट्री एंड एग्जिट दोनों डिफाइन करो, उसके बाद आप ट्रेड लो। ओके, जब तक आपने उसका एग्जिट फिल्टर नहीं किया दिमाग में, ओके, तो होता क्या है ना, साइकोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट रहता है, उसमें आपको लग रहा है कि साइकोलॉजिकल बायस बेसिकली बोलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक बुलिश है, तो आप सारे इंडिकेटर्स फॉलो करोगे जो उस पर्टिकुलर स्टॉक को बुलिश फेस बता रहा है। ओके, अगर आपको एक इंडिकेटर भी एग्जिट बता रहा है, उसको नेगेटिव बता रहा है, तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। उसको एक साइकोलॉजिकल बायस रहता है सब जगह पे। तो ये हमारा बुलिश सेटअप है, उसी का यहाँ पे स्कैनर रेडी है। इस ये स्कैनर एंड स्क्रीन है, वो आपको मिल जाएगा, वो आपको बता दूंगा लास्ट में आपको डाउनलोड कैसे करना है। Okay, so this is basically a positive divergence strategy. Whenever you are getting a divergence between the price and the indicator, when the price is making a lower bottoms and the indicator is making a higher bottoms, that means a divergence, bullish divergence has been created. And the entry would be when the divergence candle high is taken out, along with the mean divergence strategy, mean divergence study showing us a positive signal. That time would be our entry. And most importantly, our exit would be when the mean divergence study gives a negative crossover. So I hope both the Hindi as well as English users are getting benefited from the webinar. So let's take some more examples so I can acknowledge you more over here. Let's first discuss this examples only. Okay, so these are the examples we have got. Let's take Excite Industry. Excite Industry also we have got over here, 19th candle. Okay,
this mean reversion study is also giving a positive crossover along with the bullish divergence. It is signaling us a swing trading, good setup for swing trading. After that, it has started making a higher rise over here. Okay, same, the stop loss would be this particular candle low would be our stop loss, or what you can say, the first candle low plus 5 points would be your low, or would be your stop loss. Okay, and exit would be when the mean reversion study gives a negative crossover. Second, let's say endurance. Endurance has also given us a signal on this particular bar 19th candle. So our setup has been matched positive divergence. Okay, over in this particular screen, it's also a benefit for you. It will auto detect the divergence between the price and the indicator. As you can see, there are lines has been formed. Okay, so it will show you the divergence between the price and indicator. Also, this strategy would work best in the NSE cash. Okay, so this is the Nifty cash chart. Over here also negative divergence has been formed around, you can say, September month, and the positive divergence has been formed around in this June month. It's easy to define, easy to detect this divergence over here. Okay, let's take some other example like this 12 over here, run. So only one stock we have got which the negative divergence has been formed. So negative divergence has been formed over here. So this is a negative divergence has been formed over here. When, what is the negative divergence? First of all, what is the negative divergence? When the price is making higher tops and indicator, the mean reversion indicator is making a lower tops. That would be our criteria for bearish divergence, negative divergence. So the bearish setup for tactic 2, price forming higher tops and mean reversion study forming lower tops. So this is a bearish divergence. So mean reversion strategy, mean reversion indicator is showing us the momentum, the deviation of this particular price is getting lower. Okay, so that means this is a bearish criteria. And an entry would be based on the short entry after divergence candle low is taken out, along with mean reversion study giving negative crossover. Okay, so whenever you can see our divergence candle low has been taken out. So our low has been taken out on this candle, and the mean reversion study is in negative movement. Okay, so this would be our short entry trade. When would be our exit trade? When the trade mean reversion study give positive crossover. When this mean reversion study would give positive crossover, that time will exit our trade. तो जब भी हमें शॉर्ट ट्रेड लेना है, शॉर्ट ट्रेड में क्या करना, जब भी डाइवर्जेंस देख रहे हो आप, यहाँ पे प्राइस हायर हाई बना रहा है यहाँ पे, लेकिन इंडिकेटर यहाँ पे लोअर हाइस बना रहा है, तो वो नेगेटिव डाइवर्जेंस हुआ, बेरिश डाइवर्जेंस हुआ. अब हमें इसमें एंट्री कब लेना, शॉर्ट साइड पर, जब भी हमारा डाइवर्जेंस कैंडल का लो टेकन आउट होगा अलॉन्ग विद जो मीन डाइवर्जेंस स्टडी है वो नेगेटिव होना चाहिए. ओके, तभी हमें यहाँ पे हमें शॉर्ट ट्रेड लेना है. अब आप शॉर्ट ले रहे हो तो मे बी आप फ्यूचर में शॉर्ट लोगे या फिर इंट्राडे शॉर्ट लोगे. अगर आप सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव जा रहे हो तो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप स्विंग के लिए जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आप एफएनओ ग्रुप रखना, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप शॉर्ट करोगे तो एफएनओ में ही करोगे, क्योंकि आप कंटिन्यूसली स्विंग के लिए शॉर्ट करोगे तो एफएनओ में ही पॉसिबल है वो, कैश में, नॉर्मल कैश स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं रहता है. तो अगर इस सेटअप को ट्रेड करना आपको तो इंट्राडे करना पड़ेगा. अगर आपको एफएनओ में करना है तो यहाँ पे आप ग्रुप चेंज कर सकते हो. ओके, सो लेट्स समराइज दिस. तो टैक्टिक 2, सो बुलिश सेटअप प्राइस कि वहां पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, बुलिश डाइवर्जेंस. एंट्री कब लेना है, जब हमारा डाइवर्जेंस कैंडल का हाई टेकन आउट हो रहा है. ओके, एंड उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को एग्जिट कब लेना है, जब मीन डाइवर्जेंस जो इंडिकेटर है हमारा नेगेटिव क्रॉस ओवर करेगा. ये हमारा बुलिश सेटअप हो गया टैक्टिक 2 का. टैक्टिक 2 यहाँ पे बेरिश सेटअप, जब प्राइस में यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस हो रहा है. एंट्री कब होगा, जब वो बेरिश डाइवर्जेंस, जो डाइवर्जेंस कैंडल है उसका लो ब्रीच हो रहा है अलॉन्ग विद मीन डाइवर्जेंस स्टडी गिविंग नेगेटिव मूवमेंट. एंड एग्जिट कब लेना, जब ट्रेड व्हेन मीन रिवर्जन, एग्जिट ट्रेड व्हेन मीन रिवर्जन स्टडी गिव पॉजिटिव क्रॉसओवर. अब उस शॉर्ट साइड को मुझे एग्जिट कब करना है, जब मीन रिवर्जन स्टडी मुझे पॉजिटिव क्रॉसओवर देगा. ओके, तो ब्यूटी ऑफ मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी कि वो साइडवेज मार्केट में भी हेल्प कर रहा है, मुझे टाइमली भी एग्जिट भी बता देता है यहाँ पे वो, ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरा ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा लॉस भी नहीं होगा यहाँ पे. ओके,
टैक्टिक 1 का हम एक समरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे बुलिश सेटअप, फर्स्ट कैंडल हाई शुड बी अबव 5 and 10 EMA, which is basically an averages, and close should be below averages. So ये मतलब क्या बताता है कि मेरा जो पर्टिकुलर प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस, वो मेरे एवरेजेस से बहुत डिविएट हो चुका है। एंड जब सेकंड कैंडल उसको ब्रीच कर रहा है विद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, सेकंड कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग बुलिश एंड फर्स्ट कैंडल हाई शुड गेट टेकन आउट। Okay, along with that, a mean reversion study should give positive crossover, or you can say positive movement. So that would be our entry point. Exit trade कब लेना है इसमें? जब हमारा mean reversion study इसको negative crossover कर देगा, तब हमारा वो exit हो जाएगा। Mean reversion tactic 1, bearish setup. First candle low should be below 5 and 10 EMA averages and close should be above averages. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो कैंडल का लो है वो एवरेजेस के नीचे होना चाहिए एंड जो क्लोज है एवरेज के ऊपर होना चाहिए। तो मतलब वो इंडिकेट करेगा कि मेरा प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस मीन से डिविएट हो चुका है। एंड जब सेकंड कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन रहा है एंड वो फर्स्ट कैंडल के लो को भी ब्रीच कर रहा है, तभी हमारा वहां पे एंट्री बनेगा। अलॉन्ग विद मीन रिवर्जन स्टडी शुड गिव नेगेटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव मूवमेंट। एंड एग्जिट कब लेना? जब ट्रेड व्हेन मीन रिवर्जन स्टडी गिव पॉजिटिव क्रॉसओवर। ओके, तो ये हमारा था। ये जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैंने डिजाइन की है टेक्निकल क्वेरी के बेस पे, इसमें मैंने एक ही में टैक्टिक 1 एंड टैक्टिक 2 का पूरा सेटअप डाल दिया है यहाँ पे। अभी आपको पर्टिकुलर सिर्फ टैक्टिक 2 पे ही फोकस करना है, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस पे टिक कर दिया है। सिंपल आपको टैक्टिक 1 पे ही फोकस करना, तो यहाँ पे बुलिश रिवर्जन एंड बेरिश रिवर्जन पे आपको टिक करना है इन रिलेशनशिप। एंड ये ध्यान रखना कि आप क्वेरी ऑफसेट यहाँ पे कितना रख रहे हो। ओके, एंड ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन एंड क्वेरी फाइल पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको बता, बिफोर स्टार्टिंग अ Q&A सेशन मैं आपको बता देता हूँ ये आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। ओके, तो फाइल में जाना है, डाउनलोड फाइल्स में जाना है, EOD पे टिक करना है एंड गेट फाइल लिस्ट करना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 फाइल्स आ गए यहाँ पे, उन दोनों फाइल्स को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। ओके, 0429 webinar.zip फाइल डेटेड 29 अप्रैल 2023, ये फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसका जो स्क्रीन फाइल है वो आपको चार्ट में जाके लोड स्क्रीन में मिल जाएगा। ओके, एंड इसका जो क्वेरी सेटअप है टेक्निकल क्वेरी का, वो टेक्निकल क्वेरी में टेक्निकल क्वेरी में लोड में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसका सेटअप। नील मीन रिवर्जन टैक्टिक इस क्वेरी का नाम है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस जो मेरा पीपीटी है, ओके, जो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये बनाया, इसका भी आपको जो PDF फॉर्मेट है वो आपको अपने स्पाइडर फोल्डर में मिलेगा। ओके, जिस जो भी ड्राइव में आपका स्पाइडर फोल्डर है उस ड्राइव में ही आ गया रहेगा। Okay, so whenever you want to see the screen and the query file, simply go to file, download files, click on EOD and get file list. You have to download this webinar.zip file dated 29 April 2023. You will get the query and the screen file in the load screen and the technical query load query. So I hope you have enjoyed the webinar. Some insightful thoughts you have got from the webinar, some new concept you have learned. So with this, I can end my webinar over here. And if you have any query, you can directly coordinate us in this support number, which is 02235018383, or you can WhatsApp on this below numbers. Okay, so this is Neil Parekh signing off from the webinar. I hope you have learned most of the good things from the webinar and the insightful webinar. So thank you all.